तरमीम करवाना चाहते हैं जो पूर्व के नक्शे में नहीं थी। ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के नक्शा तरमीम करने की अधिकारिता संबंधित तहसीलदार को दी गई है, न कि माननीय न्यायालय को। माननीय न्यायालय को मात्र पूर्व के नक्शे में पेज 13 पर आ जाइए, वहाँ रिलेवेंट है। तहसीलदार के प्रतिवेदन संलग्न ये जांच प्रतिवेदन क्रमांक इतना में उल्लेखित किया है कि ग्राम बन्ना जवाहर शाह सिंह की आराजी क्रमांक इतना की जांच पश्चात नक्शा तरमीम प्रस्ताव किया गया। बावत जांच हल्का पटवारी सरहदी कृषक आवेदक गण के पिता महेंद्र सिंह व अन्य ग्रामीण जन उपस्थित रहे। We were not a present manner. You may not be present। नक्शा तरमीम से आपको क्या तकलीफ है? जब होगा आपको सुना जाएगा, आपकी आपत्ति ली जाएगी। वही 467 की पूरी कोई ये बेच रहे हैं, कोई वो बेच रहे हैं। ये वो नहीं बेच रहे हैं, ऐसा नहीं है। Your title is not in dispute. Thing is that after selling some portion of land from 467/5 का जो जमीन बचती है वो उस पे काबिल है। हमको भी बेच रहे हैं। प्राइवेट डिस्पांडेंट्स दो तरह के हैं और ये एक दूसरे से लड़ रहे हैं और वो बेच रहे हैं, एक दूसरे को पार्टी बना रहे हैं। हमें पार्टी नहीं बना रहे हैं, डेलिबरेटली हमें पार्टी नहीं बना, जबकि हम अफेक्टेड पार्टी है। वही 467 ही है। इसमें क्या कहा है एडिशनल कलेक्टर ने? अल्टीमेटली एडिशनल कलेक्टर ने इसलिए कहा कि हम उसमें पार्टी ही नहीं थे, तो हमको सुना ही नहीं गया। हमारा केवल ग्रीवियांस है कि हम अगर हमको सुना जाए, हम भी जो है सरहदी का, अगर पूरी प्रॉपर्टी हमने नहीं ले, हम भी सरहदी काश्तकार हैं, तो हमें भी जो है सुना जाए। 467 से का ही खतरा न। यस मिस्टर मिश्रा, मेरा ये निवेदन है लॉर्डशिप कि जिस सूट प्रॉपर्टी की जिसका ये इन्होंने केस लगाया लॉर्डशिप, उसी आर्डर से व्यतीत होकर के इन्होंने सिविल सूट लगा दिया लॉर्डशिप। सब लोगों ने सिविल सूट, जितने भी इनके पत्रकार लॉर्डशिप, हमने मेंटेनेबिलिटी पर लगाया लॉर्डशिप। पहले इन्होंने सिविल सूट लगाया, सिविल सूट में इनको स्टे नहीं मिला लॉर्डशिप। फिर यहाँ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के आर्डर को यहाँ चैलेंज किया, वहाँ लगाया इन्होंने। मैंने सिविल सूट हमने बताइए किया है लॉर्डशिप। डॉक्यूमेंट नंबर 1 है लॉर्डशिप। हाँ 36A 2021 लॉर्डशिप। सिविल सूट नंबर 36A 2021। वो हमने पैरा 2 में डिस्क्लोज भी किया हुआ है। ठीक है, किया है आप। केवल एक सूट का लिखा है, सब लोगों ने सूट लगाया लॉर्डशिप। सूट इज ऑलरेडी पेंडिंग लॉर्डशिप। ऑलरेडी पेंडिंग है ये लॉर्डशिप, सूट पेंडिंग है और इसमें स्टे भी मिला है। इसमें सूट जो ये कह रहे हैं कि स्टे नहीं है, इसमें स्टे कब कहा है इन्होंने? स्टे नहीं है कब कहा है? अभी बोला, मैंने तो नहीं सुना। आपने इनको स्टे नहीं मिला, ऐसा बोला। I'm sorry, my lord. So civil suit is already pending. So all the proceedings will be subject to the outcome of the civil suit. But my lord, my lord का judgment है lordship. But in the influence of this, the revenue court order, my rights may not be affected, my lord. कर देते हैं। All the rights will be subject to the outcome of the civil suit. That's all. In fact, my lord, I may be भाई जब सिविल सूट में जो डिसाइड होगा वो बाइंडिंग होगा ना। सिविल सूट में अलग, लेकिन ये जो फाइंडिंग ये जो करवा लिए हैं रेवेन्यू कोर्ट में रिकॉर्ड सुधारवा क्या आप मतलब समझते हैं? When all the findings will be subject to the outcome of civil suit, इसका क्या मतलब होता है? अली साहब समझाएंगे आपको। In fact, I may be only. I may be क्या होता है? You have already filed a civil suit. Yes. All rights and duties of the parties will be decided by under the civil suit, and they will be binding on the revenue. They will supersede the findings of the revenue court. In fact, my lord, when in the revenue proceeding, I was not only my. Prakash Mishra, learned counsel for the petitioner. Shri Piyush Bhatnagar, learned government advocate.
Shri Shankar Dayal Mishra, Learned Counsel for respondent number 6. Next. That the petitioner is aggrieved of the orders passed by the additional collector, thereafter additional commissioner, and the Board of Revenue, allowing an application filed by Kumari Jyoti Singh, daughter of Mahendra Singh, and Pitendra Singh, son of Mahendra Singh, and others, seeking सुरेंद्र सिंह जासवाल and others लिखा तो है यस seeking नक्शा तरमीम को क्या बोलेंगे? करेक्शन ऑफ Correction of revenue map. Full stop. Next para. Shri Mishra submits that he has purchased 7 acres of land through different sale deeds from chunk of 13.50 acres of land contained in survey number 467/5 ka, and similarly he has purchased 6.070 acres of land out of chunk of 15 acres of land contained in survey number 467/4, and therefore without giving him an opportunity of hearing, no orders for correction of revenue map could have been passed. Full stop. Next para. It is submitted by Shri Satya Prakash Mishra that relatives of the applicant before the additional collector are litigating against each other, and in the garb of intra-family litigation, they are trying to oust the present petitioner, who is a bona fide purchaser of the land, as mentioned above, by sale deeds contained in annexure P3, P4, and P5. P4, P5, and P6. Next paragraph. Shri Shankar Dayal Mishra, Learned Counsel for respondent number 6, submits that in fact parties have already filed civil suit, and the findings of civil suit as to the title and the right of the parties will be determined in the said civil suit, and that will be binding on the parties and will supersede the orders of the revenue authorities. Full stop. Next para. Shri Bhatnagar submits that state is a formal party and a formal party. Next para. After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that plea was taken by the successors of Mahendra Singh that survey number 467 has been shown in a unified form in the map, whereas different parts of the survey number, namely survey number 467/5 ka, 467/6 and 467/7 should have been shown separately. Full stop. With this prayer, my successors of Mahendra Singh had approached Tehsildar, which pleaded his helplessness in terms of the provisions contained in the Land Revenue Code, and therefore successors of Mahendra Singh were forced to approach the additional collector. Full stop. It is evident that the parties before the additional collector were trying to obtain correction of revenue map on the basis of their holding. Full stop. It is also an admitted fact that present petitioner had purchased certain parcel of land from survey number 467/5 ka and 467/4. Full stop. That will not make him absolute owner of the complete Araji. Full stop. Therefore, on the basis of the possession, actual possession, if correction of revenue map is sought, then that cannot be faulted. That action of the successors of Mahendra Singh cannot be faulted with. However, since parties have
approached the learned civil court. क्या है इनका दावा, कहाँ है बताइए, दावे में क्या मांगा है इन्होंने? डॉक्यूमेंट नंबर 1 है लॉर्डशिप। हाँ, क्या दावा है? दावा है निश्चिता किया लॉर्डशिप 467(5) और लॉर्डशिप हस्तक्षेप न करें, न अधिकृत करें, लेकिन से जाएगा फिर विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम और 34 परमानेंट इंजंक्शन मांग रहा है, मैंडेटरी इंजंक्शन। दूसरा डॉक्यूमेंट D2 है लॉर्डशिप। 3 दावे हैं लॉर्डशिप। हाँ, ये तीनों दावे किस किसने लगाए? इन्होंने ही लगाए क्या? कुछ इन्होंने लगाया, एक इन्होंने लगाया है? एक इन्होंने लगाया। हमारी तरफ से बात नहीं की। हाँ, क्या लिखा? Civil court and therefore making their respective claims and seeking injunction and declaration in their respective suits, comma, this petition can be disposed of with the direction that all the rights and liabilities of the parties, including the correction of revenue map, will be subject to the final outcome of the civil suit. The suits, in above terms, petition is disposed of. Oblige. सर उसमें करेक्शन है, मॉडिफिकेशन तरमीम। Modification कर दीजिएगा, revenue modification. Hello, sorry to interrupt. By mistake, I made a request in item number 117. It's 135. नहीं, ये नहीं होता है, सॉरी, आपने गलत रिक्वेस्ट की, फेस दी कॉन्सिक्वेंस। Lordship, this is second well application. Offense under section 8/20B NDPS Act. जी, First bill has been withdrawn on 23/4/2022 को। Now circumstances has been changed, your lordship. क्या चेंज हो गया बता? चालान भी पेश हो गया। इसके बाद लॉर्डशिप इसमें जो गवाह हैं इंडिपेंडेंट विटनेस वो हो चुके हैं, हॉस्टाइल हो गए। आईओ एग्जामिन हो गया? IO has been not examined, but your lordship kindly see, इसमें एक अभियुक्त जो उस समय फरार हो गया था उसका मेमोरेंडम लिया है। वो स्वीकार करता है कि ये जो भी सामान है ये मेरा है। ठीक है, आप मौके से नहीं पकड़े गए? गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी में बैठे सर, हम आगे की सीट पे बैठे थे। पोजीशन क्या होता है? कॉन्शियस पे है, कॉन्शियस पोजीशन है साहब, तीनों के साइन भी हैं। 3 मूल्य पकड़े। बताइए और क्या करना है? आफ्टर वीक का एग्जामिन। वीक नहीं होता है वकील साहब, बहस करने के बाद में। और श्री नाम बताइए आपका? अनिल वर्मा लॉर्डशिप। अनिल कुमार। इसमें डायरेक्शन कर दिया जाए लॉर्डशिप, 10 महीने से जेल में है। हाँ ठीक है। After arguing at length, praise for withdrawal of this second bail application on behalf of Vanshmani Prasad Vaishya. Full stop. Accordingly, application is dismissed as withdrawn. Next para. He submits that applicant is in custody for a period of 10 months and therefore trial court be directed to expedite the trial. Full stop. Accordingly, trial court is requested to expedite the trial and if possible complete it within a period of 6 months from the date of receipt of the copy of the order. So this is the fourth application. The earlier bail, third application was dismissed. Page number 18, Lordship. Reverted to remove the prayer after statement of Preeti, Lordship. Statement of? Third bill was on the ground of Lordship, delay in trial, Lordship. The Honorable Court has called the record from the trial court, Lordship. And thereafter, Honorable Court is given liberty, Lordship. Preeti was examined, Lordship, after 15 days of the incident. Why she was the star witness, Lordship. May I submit? Sorry to interrupt, my lord. IO was examined on 18/11, my lord. And request of the counsel for accused to postpone the for cross examination on 28th, my lord. अच्छा सर, वो लास्ट ही चल रहा है साहब, 2 पेशी में से लास्ट गवाह है आइयो सर, लास्ट। फिर क्या बचा? देखिएगा, श्री पुष्पेंद्र दुबे, कर्नेल काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट कमलेश चौहान, श्री मानसवनी वर्मा, लर्नेड गवर्नमेंट एडवोकेट फॉर स्टेट, submits that last prosecution witness, that is IO, was examined on 18th November 2022. On request of the counsel for the present applicant, his cross-examination is postponed to 28th November 2022. Full stop. Trial is going to be concluded
Full stop. Therefore, no indulgence is required in the matter. Adjust Shri.